Hello students. Yeah. In last two lectures or last two video, I covered a basic introduction of exception and exception handling. Now, in this video, I'm going to continue with the exception handling with the context of Java programming. Okay, so that will be the actual syllabus कि भाई हम क्या है, किस तरह से Java में किस तरह से exception handling कर सकते हैं, किस type के exception हो सकते हैं, right? So, I have a presentation for it, and I think I have discussed its outline कि भाई what we are going to see in this particular module, right? So the first thing that will be like, what is the idea behind exception? So I already discussed an exception is an unwanted or unexpected event which occurs during the execution of a program. Okay, so that is at run time or somewhere कुछ भी program लिखते हैं या जब execute होता है at that time something happens, right? Or which is not wanted, unwanted or unexpected, हमने expect नहीं किया होता है, but through programming mistake or something, So अगर it occurs, then it disturbs the normal flow of the program instructions, right? So this is what an exception is, right? And Java handle this exception using five keywords. So exception handling mechanism in Java, that is basically Java uses a throw and catch model, catch and throw model. This means that it identifies an exception. Exception अगर कोई program में होगा, so it will identify the exception, and if it is there, then it throws something. Right? It throws that exception, and that will be that exception will be called as some exception handler. So we would have written, or we have written, we'll be writing some code to handle the exception, try and catch and something like that. So we'll discuss that thing, right? So basically, exception and errors. What kind of errors may be possible during here? So no matter how good we are as a programmer, but as a human nature, कुछ ना कुछ mistake तो रह ही जाती है हमारे साथ, right? So या कुछ ना कुछ mistake रह जाती है या कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है that is not in our control, right? So we'll be having a kind of error like syntax error. Syntactically कुछ लिख के that will cause an error. भी syntax में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो as per the rules, जो प्रोग्रामिंग रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स या जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते, that will be a syntax error. सम ऑफ द लॉजिकल एरर्स, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं या कुछ भी ऑपरेटर यूज करते हैं, तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, दैट विल बी लॉजिकली नॉट करेक्ट, राइट? सो दैट काइंड ऑफ एरर्स आर देयर. एंड रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स मतलब अगर प्रोग्राम रन हो रहा है एंड ड्यूरिंग दैट रन टाइम अगर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एट दैट टाइम इट स्टॉप योर प्रोग्राम. मतलब लाइक नो वी डिस्कस द डिवाइड बाय जीरो किस तरह से करते हैं या होता है तो क्या हो जाता है, राइट? राइट. सो the syntax error, you can see here statement missing, कुछ curly braces रखना भूल गए या कुछ भी रखना भूल गए या कुछ सिंबल ऐसा बना दिया हमने, वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर नहीं किया लेकिन यूज कर दिया प्रोग्राम में which we don't have a declare. Okay, so that kind of errors are the syntax errors. लॉजिकल एरर्स मतलब दिस इज दैट्स एक स्टेटमेंट लिखा है हमने कि नेट सैलरी, तो नेट सैलरी क्या है कि इट्स अ बेसिक प्लस डीआर प्लस एक ब्रैकेट लिख दिया, देन प्लस ऑपरेटर का हमने ब्रैकेट लिख दिया. दैट मींस व्हाट, लॉजिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देयर इज नो इशू विद सिंटैक्स कि सिंटैक्स आप लिख सकते हो इस तरह से, but the logical syntax or statement is not correct. That is one kind of logical error. And the third one is a runtime error. So it is an error which occurs after execution of a program. Okay, so program see syntactically सब कुछ right है, logically सब कुछ right है, but at run time अगर कुछ ऐसी situation आती है जहाँ पे आपका statement का execute नहीं हो रहा है, मतलब it's not a proper thing. जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में यहाँ कि भाई प्रोग्राम रन हमने लिख दिया है कि भाई यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया है टू रीड फाइल फ्रॉम यूएस डेटाबेस सर्वर या लोकेशन यूएस से कुछ फाइल रीड कर ली, राइट? बट उसमें क्या होता है कि भाई एट रन टाइम इफ दैट फाइल इज नॉट अवेलेबल, सो प्रोग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली सब कुछ राइट था, प्रोग्राम मतलब रन टाइम पे वो फाइल अवेलेबल नहीं थी, दैट्स व्हाई इट्स अ रन टाइम एरर कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, स्टार्ट हो गया है, लेट्स से डिवाइड बाय जीरो, राइट? सो डिवाइड बाय जीरो इज व्हाट कि भाई इंटेंशनली कोई प्रोग्रामर ऐसा नहीं लिखता है कि भाई डिवाइड ए बाय जीरो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? या कई बार क्या होता है कि वी यूज्ड टू राइट समथिंग लाइक नो c इक्वल टू a प्लस b, a डिवाइड बाय b, c इक्वल टू a डिवाइड बाय b हमने लिख दिया, लेकिन b की वैल्यू हमने कुछ भी सेट की, लेकिन प्रोग्रामेटिकली कुछ चेंजेस करके भी लेट्स से समवेयर अगर b की वैल्यू जीरो हो जाती है, मान लो समवेयर, राइट? सो एट दैट रन टाइम वी हमने क्या सिंटैक्टिकली क्या लिखा है कि c इक्वल टू a बाय b, बट रन टाइम पे अगर b की वैल्यू चेंज करके जीरो हो जाती है, दैट इज नॉट इन द कंट्रोल, राइट? सो एट दैट टाइम इट विल थ्रो अ रन टाइम एरर, एक्सेप्शन कुछ होता है,
it's like that. You see, if you are trying to divide something by G. So basically, this is what an exception hierarchy. Okay, so exception in Java, in the context of Java, what is exception? Exception is a class. Exception and error are two classes which is there in the Java hierarchy. जो classes की hierarchy है उसके अंदर है. So at first what we have is object class. So see, I didn't discuss anything related to object class because it's an inbuilt class and which is available in java.lang package. Okay, so it is very important class as well, right? So कोई बताता है या it is like it's a parent class. सबसे बड़ा जो parent class है ना, that is an object class. So object is a class, inbuilt class which is at the root of class hierarchy in Java, right? So Java की जो भी classes की hierarchy, inbuilt classes की जो भी hierarchy है, object is a class which is there at the root of that hierarchy. So there are some importance of object class. We'll discuss. We'll try to cover it in some different videos or some lectures, right? So we'll have a special discussion on object class. What are the methods available with the object class and what is the importance of object class, right? So we'll discuss that thing. Okay. So inside an object class there is a there is a interface called throwable interface which is implemented by exception and error class. So in an exception there is a checked exception, there is IO or compile time exception and unchecked exception. We'll discuss that thing. And error, there is a virtual machine error or some kind of different errors are there. So we'll be main focusing on exception. One second. Now let's discuss the control flow in exception only. क्या करते हैं? Basically we used to write a try and catch block. एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करते हैं कि भाई देयर इज अ ट्राई एंड कैच, सर द कीवर्ड एक ब्लॉक बनाते हैं, हम ट्राई का ब्लॉक बनाते हैं और कैच करते हैं. व्हाट वी डू इज टू हैंडल एन एक्सेप्शन वी नीड टू राइट दिस आवर कोड इनटू दिस ट्राई एंड कैच ब्लॉक, राइट? सो क्या बेसिकली क्या है ट्राई एंड कैच ब्लॉक? हमारे इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर आए ऑल्सो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने कि भाई अगर हमें कोई फाइल रीड करनी है तो विल राइट दैट कोड इन अ ट्राई ब्लॉक एंड देन कैच ब्लॉक में अगर नहीं हो रहा है, ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर है, देन कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट? सो द सेम वे व्हाट वी डू इज दिस इज व्हाट अ सिंटैक्स. एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि भाई सिंटैक्स किस तरह से होता है. ट्राई ब्लॉक लिखते हैं तो ट्राई लिखते हैं कीवर्ड, देन कर्ली ब्रेसेस, देन आवर नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं और देन क्लोज करते हैं. आफ्टर ट्राई ब्लॉक वी राइट अ कैच. कैच इज लाइक एक ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, दैट मीन वी कैरी ऑफ मेथड, ठीक है? सो मेथड लिखते हैं और मेथड के अंदर फिर लिखते हैं कि एक्सेप्शन ई. So exception, as I have discussed, कि exception is what? Exception is a class. That means what? अगर e हमने एक वेरिएबल बनाया है और exception नाम का एक क्लास का नाम दिया है. So e is what? It's a reference variable of type exception. We normally read this thing like that, right? So हमने lectures में कई सारे lectures में ये सारा discussion हो गया था already. So exception is a class. That means what? We can create a variable of that class and now we can have a so basically ये क्या होगा? E exception E, that means what? E is a reference variable which will hold a reference of some class which is there somewhere in the exception, right? So exception को कोई class extend कर रहा है या implement extend कर रहा है या खुद का exception का ही है. So we'll discuss that. Now what we do is ट्राई ब्लॉक जो होता है ना, ट्राई ब्लॉक में विल राइट अ रिस्की कोड. रिस्की कोड इन द सेंस व्हाट कि कोई ऐसा कोड है कि जो पॉसिबली एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है ना? कोई ऐसा कोड होगा हमारे प्रोग्राम में. जैसे प्रोग्रामर हम क्या करते हैं कि वी नो दैट थिंग कि भाई हम व्हेन वी राइट समथिंग, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लिखता है. प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे प्रोग्रामर को खुद को पता होता है कि भाई दिस आर द स्टेटमेंट व्हिच पॉसिबली क्रिएट एन एक्सेप्शन ना. ये ऐसे स्टेटमेंट है जो पॉसिबली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ रिस्की कोड. रिस्की कोड इन द सेंस कि भाई अगर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो इट विल टर्मिनेट आवर प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, राइट? सो एज ए प्रोग्रामर सबको पता ही होता है कि भाई वी नीड टू राइट दिस रिस्की कोड इन ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना होता है कि भाई पॉसिबल एक्सेप्शन कितने होंगे. तो इट विल आइडेंटिफाई दैट एक्सेप्शन और उसके बेस उसको कंसीडर करके ही फिर वो प्रोग्रामिंग करेगा, राइट? सो ऑल द रिस्की कोड विल बी रिटन इन अ ट्राई ब्लॉक
and corresponding catch blocks will be available. So, okay, so कोई भी अगर try block में कोई भी statement ऐसा है जो possibly अलग-अलग type के exceptions होते हैं, we'll discuss that thing also, कि भी जो throw करेगा ना, so अगर वो थ्रो करता है ना तो इसका रिस्पेक्टिव कैच ब्लॉक होगा जो जिसका कैच ब्लॉक में ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है, जिसका कैच ब्लॉक में वो वेरिएबल मैच होता है या इस टाइप का क्लास का कुछ एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, सो पर करस्पॉन्डिंग कैच में हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नाउ एज्यूमिंग द फॉलोइंग कोड, ये कोड है वेयर इन अ ट्राई ब्लॉक देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। एकदम केयरफुली इसको ध्यान में रखें बिकॉज इसके बेसिस पे आगे कुछ क्वेश्चंस है और कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, राइट। सो जस्ट सिनेरियो एज्यूम करो, इस ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर देयर आर थ्री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। हर एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। there is only one catch block, right, with exception e, and कोई भी exception throw होगा, अगर throw होता है तो that will be handled by catch block, and catch block handle करेगा, उसका मतलब क्या है कि वो exception throw होगा वो catch होगा exception catch block में, और catch block जब एग्जीक्यूट होगा तो इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 4। सो कैच ब्लॉक में हमने लिखा है एक ही स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट स्टेटमेंट 4, एंड फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट जो है दैट इज रिटर्न आउटसाइड टू द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, दैट मींस ट्राई और कैच के बाहर लिखा है, राइट। सो किस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन होगा, नाउ लेट्स डिस्कस द केस वन। द केस वन इज इफ लेट्स अज्यूम दैट इफ देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल, तो कौन-कौन से ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, कौन-कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इफ देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल, सो अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है स्टेटमेंट में, कैच कब ब्लॉक होगा, कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन देयर इज एक्सेप्शन इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। अगर किसी एक स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आया देन कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सेप्शन राइट नाउ, सो कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, ओके। सो यू नीड टू से थिंक ऑन इट कि क्या क्या हो गया। सो मीनवाइल आई विल डिस्कस आल्सो कि भाई सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट है, देयर आर 3 स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट 1 will be executed, yes, there is no exception in statement 1 और किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है, तो इन द फर्स्ट केस फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा ट्राई ब्लॉक वाला, थर्ड स्टेटमेंट भी होगा, देन डायरेक्टली फिफ्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी हैव रिटन द फोर्थ स्टेटमेंट इन अ कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे हैं अगर उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन थोड़ा है किसी भी एक स्टेटमेंट, देन कैच ब्लॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो इन द फर्स्ट सिनेरियो if there is no exception, these are the list of statement which is going to be executed, statement 1, 2, 3 and statement 5. Statement number 4 is not going to be executed, right. So that will be having a normal termination। हमारा प्रोग्राम जो होगा ना, there is no error in the program, no exception in the program, जो हमने इंटेंशन था कि हमें जो प्रोग्राम लिखा था तो will be having a normal termination, that means what our program completely executed। Now assume the case 2, let's say if assume that exception raised in statement 2 and the corresponding catch block matched। statement 2 में exception कुछ throw हो रहा है और उसका corresponding catch block हमने लिखा है जहाँ पे match हो गया, right। so in that case what will happen, कौन-कौन से statement execute हो गया, हाँ? Can I have statement numbers, कौन-कौन से हो गए, let's spell out। statement 1 होगा execute, yes, because there is no exception in statement 1, हाँ? statement 2 there is exception, okay, so statement 2 में exception आया तो statement 2 will not get executed, right। statement 2 में अगर exception आया तो उसका मतलब क्या होगा कि statement 2 is not going to be executed, there is error in statement 2, so directly catch block, try में statement 2 में exception आ रहा है, that means what catch block execute होगा and directly fourth number वाला statement execute होगा which is there in a catch block। अगर फोर्थ नंबर वाला है वो हो रहा है कैच ब्लॉक, मतलब एक्सेप्शन 3 सेकंड स्टेटमेंट में एक्सेप्शन थ्रो हुआ और जिस कैच किसी को थ्रो किया हमने और उसको कैच कर दिया, सो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया, देन डायरेक्टली स्टेटमेंट 5। सो इन द कैच सेकंड केस अगर एक्सेप्शन हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट में और उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच हो रहा है, सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5, दिस 5 statements are going to be executed, okay। I think I'm making some sense ना, ये एक जनरल सिनेरियो है कि किस तरह से होता है और इसके बेसिस पे हम बताऊंगे मैं आपकी कौन सा कोड आपको ट्राई ब्लॉक में लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए, है ना। ओके, नाउ अगेन विल बी हैविंग ए नॉर्मल टर्मिनेशन, है ना, बिकॉज देयर इज exception in the program
एंड इट इज कैच, इसको एक्सेप्शन हैंडल करना कहते हैं कि भाई कैच ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कुछ थ्रो हुआ और उसको हैंडल कर दिया हमने कैच ब्लॉक में, राइट। सो नॉर्मल टर्मिनेशन इन एक जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, लेट्स से इवन दो यू हैव हैंडल एन एक्सेप्शन, आपने हैंडल किया है एक्सेप्शन, राइट, इन दिस यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखा है, इवन दो यू हैव हैंडल द एक्सेप्शन, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि इवन दो यू हैव हैंडल एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, यू हैव रिटन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, बट अगर स्टेटमेंट 2 में एक्सेप्शन आ रहा है, देन स्टेटमेंट 3 which is there in the try block is not going to be executed. स्टेटमेंट 3 which is there in a try block is not going to be executed. That means वो आपको याद रखना होगा कि आप जो भी try block में लिखते हो ना, तो कौन सा only you should write only a risky code inside a try block, right? So even though you have handled it, but statement 3 will not be going to be executed, right? So won't be executed even though you have handled it. क्यों? क्योंकि let me go back कि यहाँ पे let's assume कि भाई स्टेटमेंट 1 देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टेटमेंट 2 यहाँ इन दिस केस वी आर गेटिंग एन एक्सेप्शन, तो क्या होगा कि डायरेक्टली आपका जंप आएगा स्टेटमेंट 4 पे, सो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, वो एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, सो स्टेटमेंट 3 दिस स्टेटमेंट 3 इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल, राइट। सो यू शुड कंसीडर एज अ प्रोग्रामर आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। Okay, so we'll directly move to the case 3, even though we'll be having a normal definition right now in case 3. So what it indicates is कि भाई length of try block should be as less as possible. Try block में पूरा पूरा का पूरा कोड लिख दिया, it should not be there, right? अगर हमने हमारा प्रोग्राम पूरा सारा try block में लिख दिया तो कोई भी जगह पे एक्सेप्शन आया तो कैच में केस इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं लिखने होते हैं। ओनली रिस्की कोड या sorry, just having some technical problem. Okay, so we are supposed to discuss case 3, right? Okay. Now in the case 3, what we have seen is if there is an exception in statement 2 and the corresponding case block doesn't match, then there will be an abnormal termination. This is what if we don't, even though we have handled it, we have written something in a try and catch block, but still कैश ब्लॉक भी ऐसा कैश बुक नहीं लिखा है जो स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो एक्सेप्शन हो रहा है उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो देयर विल बी अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेनी टाइम्स ऑफ एक्सेप्शन दैट वुड बी पॉसिबली थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक, सो उसको सभी को हैंडल करने के लिए वी नीड टू हैव अ करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक which should be available in that region. So if even though we have written try and catch block that is to handle only one type of exception, then अगर दूसरे कोई type का exception आ रहा है then also it's not like that कि we हमने exception handling का कोड पूरा लिख दिया, so there will be possibly chance of abnormal termination. Okay, so even in case 4, let's say if an exception raised at statement 4 or 5, let's say statement 4 और 5 ये कौन सा स्टेटमेंट है, कहाँ से this is not a statement of try block. Statement 4 is written where it is written in a catch block, right? So catch block में written किया है, that means what, मान लो उसके अंदर क्या होगा कि let's assume कि भी कोई भी try block में कोई भी एक statement है उसके अंदर exception हो रहा है, right? So exception हो रहा है तो भी corresponding catch block exception में आ रहा है, लेकिन कैच ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है ना, अगर वो स्टेटमेंट में if that statement also contains kind of maybe let's say प्रोग्रामिंग या सिंटैक्टिकली कुछ एरर लिख दिया या कुछ भी लॉजिकल एरर है, सो अगर स्टेटमेंट 4 भी अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना, इट मे पॉसिबल स्टेटमेंट ही है नॉर्मल स्टेटमेंट है तो इट मे भी पॉसिबल कि भी एज ए प्रोग्रामर हमने लिखा है लेकिन स्टेटमेंट 4 में भी ठीक सही से लिखा है, इट मे पॉसिबली थ्रो एन एक्सेप्शन, और स्टेटमेंट 5 व्हिच इज देयर आउटसाइड टू ट्राई एंड कैच ब्लॉक, तो उसमें क्या हो सकता है ना, इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन, so if this is the case, that means what, it always be an abnormal termination, your program will not going to be executed, it's not going to be terminated normally, it's going to be an abnormal termination. Abnormal termination क्या होता है, हमारा प्रोग्राम में अगर 1000 लाइन लिखी है, मान लो 1000 लाइन लिखी है, that means what, अगर 1000 लाइन में से पहली ही लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में अगर एक्सेप्शन आ रहा है और एक्सेप्शन हम नहीं हैंडल कर रहे हैं ना, सो
वो सेकंड स्टेटमेंट के एक्सेप्शन है ना, वो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, पूरा टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट कर रहा है मतलब सेकंड स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ रहा है, उसकी वजह से 998 लाइन्स आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। समझ रहे हो? सो दिस इज द केस, राइट? सो abnormal termination, we should avoid this abnormal termination. We should write code in a manner which will possibly handle all kind of exceptions. Okay, so sorry. There are conclusions. The first conclusion is within a try block, if anywhere exception raised, then rest of the try block won't be executed. Right? So हाँ, अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल भी किया है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स है ट्राई ब्लॉक के अंदर जो ये कह, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। देन द लेंथ ऑफ द ट्राई ब्लॉक शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, right? Only risky code should be there in a try block. The conclusion two is from this in addition to try block, there may be a chance of raising an exception inside a catch and finally blocks, right? So what is finally block, we'll discuss. But catch block में भी possibility है कि भी catch block क्या करेंगे, भी ट्राई में कोई प्रॉब्लम आया, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कैच में हमने स्टेटमेंट लिखा, अगर वो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो फिर वी डोंट रिटर्न एनी दैट कैच स्टेटमेंट इनसाइड अ कैच ब्लॉक विद इन अ ट्राई ब्लॉक। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत क्लियर होगा उसके बाद। तो कैच ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है, वे डिडंट रिटर्न राइट स्टेटमेंट इन अ ट्राई ब्लॉक, राइट? सो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो इट विल नॉट हैंडल दिस, सो इट विल बी हैविंग अ abnormal termination, right? And conclusion 3, if any statement raises an exception which is not part of try block, then it always be an abnormal termination. For example, statement 5, अगर ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखा है, स्टेटमेंट 5 इज देयर आउटसाइड द ट्राई एंड कैच ब्लॉक, अगर उसके अंदर नहीं लिखा है, दैट मींस व्हाट, स्टेटमेंट 5 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना प्रोग्राम बंद हो जाएगा, राइट? दैट विल बी ऑलवेज एन abnormal termination. Okay, so this is for the today's discussion. Now in next video I will be starting with the use of try, catch, finally. So see my next video.